Yeah. No. Is it visible? The screen is visible. Can you see the screen, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now what we'll do, we'll implement that part. Okay, we will implement uh, that whatever we learn in the distance measuring function. Now we will implement that distance measuring function in MATLAB. Okay. So what we have done now, you can यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है in imag.bw equal to zeros of 5 5. So what actually is doing? So what this statement is doing? Let me write percentile. ठीक है, देखो अब मैं ये जो पहला परसेंटाइल लिखते हैं, देखो मैटलैब में जब मैं परसेंटाइल लिखूंगा वो कमेंट लाइन हो जाएगा, समझे? तो ये जो आपका एक वेरिएबल है इमेज डॉट पी डब्ल्यू जो है एक वेरिएबल है दैट इक्वल टू जीरोस ऑफ 5 5. जीरोस ऑफ 5 5 जो है एक फंक्शन है, जीरोस एक फंक्शन है जो आपका एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा 5 × 5 और उसका हर एक एलिमेंट 0 होगा. क्लियर? नाउ इफ यू एंटर दिस वन, so what happened? It created a matrix of 5 5 and every element of this will be 0. Okay, every element of this will be 0. Fine. So if I write like this now, if I write, okay, now what will it do? Now it will be basically create the element, particular element. Let me write quota statement. Versatile symbol निकालने से so what it is basically happen, तो बताओ क्या होगा अभी. तो जब मैं लिखा अभी bw.image.bw0 5 × 5, so it is nothing but it will create a matrix of 5 × 5. Okay, 5 × 5 and zeros. When you write the zeros of this function, so it will create a matrix of 5 × 5 and every element will be 0. Every element will be 0. Okay, every element will be 0. So when I write the bw of 2 equal to 1, so that means this will be 2. 2, 2. वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दिस, बताया था शायद. अब जब आप मैट्रिक्स को मैटलैब में रिप्रेजेंट करोगे, योर स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी नॉट 0 0. स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी 1 1 से स्टार्ट होगा. बट जब हम लोग मैथमेटिकली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था? वो 0 0. लेकिन मैटलैब में क्या होगा? वो हमेशा 1, 1. दिस विल बी 1, 1. Okay, this will be 1, 2. This will be 1, 3, and this will be 1, 4. Why it is only 4 elements are represented? There should be 5, no? Okay, we will see why it is 4. If I write b equal to zeros of 5, 5. So it is representing, I can see representing 5 columns and 5 rows. Okay, when we writing bw equal to zeros of 5, 5. So what is actually happening? Now you can see the matrix is created with 5 rows and 5 columns, and all the elements are zeros. So after that, when we write this further, now if I write bw of 2, 2, now what will happen? So it will make the second element 2, or we will assign, sorry, bw of 2, 2 equal to 1. Okay, if I write equal to 1. So what will happen? So it will assign the second column 2, 2 जो indexing था उसको वो 1 कर देगा. Similarly, you have to making 4, 4 to 1.
Now similarly I am doing BW of 4 comma 4. That means fourth index जो आपका था that will be assigned to 1. Clear? So what happened? I can see here. So we have created a matrix of 5 comma 5. So what we have done now, two indexing values are assigned to 1. What are indexing value? This matrix is 1. Okay, this indexing of matrix is 1 and 4 comma 4 matrix is 1. Okay, so why I'm written 1? Now what will we do? So in our program, so I will calculate the distance. Okay, distance with respect to these 2 points. अभी इस point और इस point को लेके हम लोग distance निकालेंगे हर एक coordinate का, मतलब यहाँ से इसका distance, यहाँ से यहाँ का distance, इसका distance, इसका distance, इसका distance, every coordinate का distance निकालेंगे with the help of these 3 algorithms which we have already discussed. Fine? Clear? Is it clear? So first we have to define a matrix. Okay, first we have to define a matrix. Or in case of image, you can take the image also. तो मैट्रिक्स ले लो क्योंकि इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप इमेज भी ले सकते हो. अगर इमेज लोगोगे ना व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इमेज? इमेज का मिनिमम साइज जो होगा आपका 256 क्रॉस 256 होगा. फाइन, इसलिए हम लोगों ने छोटा सा मैट्रिक्स लिया है 5 क्रॉस 5 और 1 जो वैल्यू लिए हैं मतलब उसको हम लोग ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, मतलब उससे हम लोग अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट लेट मी राइट द प्रोग्राम. So you can see the result here. अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया देखो. अभी अब कोई बता सकते हो क्या रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया है ये? Now this is your index number 22. This is the index number 44. Okay, with respect to this two. 4 connectivity का sir. For connectivity. D1 sir. Is it DE? Equivalent distance calculate किया हम लोग. ठीक है. We have calculated the equivalent distance. Okay, so we have calculated the equivalent distance between these pixels. Okay, now this is a function which basically we are using in MATLAB. Okay, we are using a function because MATLAB why we are using MATLAB? The reason is MATLAB having many predefined functions. Okay, you are not required to write all the functions. Okay, तो हम लोगों ने ये फंक्शन यहाँ पर यूज किया है. यहाँ पर क्या है? BW distance is a function. ठीक है, BW distance और पैरामीटर क्या पास किया हम लोग? पैरामीटर जो पास किए ये जो इमेज BW को पास किए. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें है. एक तो डिस्टेंस आउटपुट क्या है? दो आउटपुट, एक आपका डिस्टेंस है, एक आपका IDX आया है. ठीक है, IDX इज बेसिकली रिप्रेजेंट योर you can say it will be basically represent the nearest neighbor matrix values. Okay, you can see it is either 17 or 19. So based on the position of non-zero element using it लीनियर मैट्रिक्स. ओके, तो ये जो है आपका पोजीशन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ लीनियर मैट्रिक्स में. ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स जो है, लेकिन बेसिकली जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका पहला वाला इम्पोर्टेंट है जो आपका डीई कैलकुलेट किया है. फाइन. सो इफ यू वांट टू परफॉर्म अदर ऑपरेशंस सो सो अब ये फिगर दिख रहा है आपको. दिस फिगर, ऑल ऑफ यू कैन व्यू दिस फिगर.
Everyone can see this figure. Yes, sir. Let me share screen share. Yeah, now it is visible to all of you. Yes, sir. Yes. So now you can identify easily now what this picture now and what basically we have done. Okay, now we have uh, taken an image. Okay, we have taken an image. Then we have calculated. Now you can see this image. Now we have this figure basically used to calculate the DE distance between the pixels. Okay, now we can see a three concentric circle. तीन circle दिखेगा आपको. Now basically you have calculated this is point P, this is point Q, and this is point R. तीन different points के लिए हम लोगों ने points लिया और उस points से हम लोगों ने क्या किया? Equivalent distance निकाला है पहला figure. Similarly, दूसरा figure में क्या निकाला है? Now the second figure, as we can see, it is displaying the diamond-like shape. यहाँ पर क्या है? You are finding the diamond-like shape, so we can easily say that this particular diagram represent your city block distance. Okay, now this is your. You can from the diagram you can easily see this is your crossbar distance. Okay, crossbar distance. How it is clarified because it is showing a square shape, and this is your last one, which is called wireless equivalent distance, which is based on your M connectivity. Okay, so now coming back, how actually this diagram आया है, main चीज है कि diagram कैसे आया, result कैसे आया इसका, ठीक है? So this is the program. So what we have done now, what we have done is, so this is a program for calculating the three different mode of distance. So I have taken a matrix of 200 cos 200. ठीक है, क्या लिया हम लोग? Now this is create a matrix of 200 for 200. Now I'm taking three values. Now 50 b of 50 comma 50 is equal to 1. Then 50 comma 150 is equal to 1, and 150 comma 100 is equal to 1. मतलब एक मैट्रिक्स लिए और ये तीन कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को 1 किया. मतलब with respect to this 3 point, now I'm going to find every distance. Fine. So now dn represent your equivalent distance, dq is your city block distance, d3 is your chessboard distance, and d4 is your M connectivity distance or college distance. Okay. Now what we are using, now we have, as I already said, so we will use a predefined function which is your BWBIST. So this is a predefined function, is a MATLAB, okay, which is used to find the distance between the 2 points. So what a parameter here, now parameter finding, पहला जो पैरामीटर होगा आपका, आपको इमेज या फिर आपका मैट्रिक्स को पास करना है. Fine. So I have passed the matrix value there. Then which type of distance you want to calculate? So if you want to calculate the equivalent distance, so you have to write the equivalent distance. If you pass the parameter city block, अगर पास करेंगे तो वो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस करेगा. अगर वो चेस बोर्ड पास करोगे, चेस बोर्ड या फिर कॉलिस बोर्ड इक्विवेलेंस करोगे तो वो पास करेगा. So this is a calculation. How we are calculated. Now rest part is how we are plotting. Now second part is plotting the figure. जो output आपको दिखाया था वो figure है, तो इसलिए हम लोगों ने figure command को use किया यहाँ पर. Now you have to use the command called figure. Now subplot क्या कर रहा है ना, you can find a subplot here. Now use the command called subplot. सबप्लॉट जो है बेसिकली आपको यूज होता है एक ही डायग्राम में या एक ही फिगर में. आपको अगर मल्टीपल डायग्राम दिखाना, इन दिस केस आप देख सकते हो, इस केस में हम लोगों ने, हमारे पास एक फिगर है. Now in this case you can see, now एक फिगर में हम लोगों ने एक फिगर में 4 डायग्राम दिखाया, इसलिए हम लोग सब प्लॉट यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, सब प्लॉट फंक्शन यूज कर रहे हैं, सब प्लॉट. ओके, नाउ इट विल डिसाइड द कोऑर्डिनेट 2,2, मतलब 2,2 कोऑर्डिनेट में. नाउ दिस इज अ फिगर नंबर, व्हाट फिगर वी आर राइटिंग. नाउ फिगर नंबर 1. ओके, दिस फिगर नंबर 1, एंड वी आर गिवन
the name of the figure, as well as we have converted that figure to the grayscale. Okay, this will be basically converted to grayscale. Fine. Similarly, this for the subplot 2 comma 2 for the second figure. Then we are converting the grayscale. Then your title. Okay, so this will be basically this part. This part is your displaying the figure. लेकिन आपका जो मेन जो कैलकुलेशन हुआ है, the main calculating how to calculate the distance of this. Now this is the basic function that we are using. This is the basic function that we are using while calculating the distance. Fine. समझ में आया? ये जो चीज है, पहले आपको इमेज either you can pass the image or create the matrix. Then these are the different methods d1, d2, d3, d4. So how we are calculating? We are calculating with the help of the predefined function, that is bw distance. Then we will calculate based on the parameter that will be passed. ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करता है. इन द प्रीवियस केस क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वो अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट it will calculate the equivalent distance. ठीक है. Now if you want to plot the result of this graph, okay, plot the graph, मतलब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे या फिर प्लॉट करोगे, now we have to use the plot function to display the image. So any doubt regarding this program? Yes. Any doubt? How we are getting the output? Yes. So you have to show me the output. Okay, implement and you have to show me the output. अगर कोई डाउट नहीं है तो Please, I'm audible. Why anyone is not replying? तो मैंने आज ही मीन्स सब ये ट्रायल वर्जन में लॉगिन किया है, बट तो मैं डाउनलोड नहीं की हूँ. मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ इसको? ऑनलाइन कर सकते हो. मीन्स 30 डेज का ही ट्रायल है ना इसमें, फिर नहीं तो परचेज करना होगा? हाँ, ऑनलाइन कर सकते हैं. बस आउटपुट दिखाना है आप लोग करके मुझे आउटपुट दिखाना है. ये तो कैसे होगा, हम नहीं कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट आप नहीं करोगे तो कैसा होता है? हाँ सर, मैंने आपका 2 क्लास अटेंड अच्छे क्लियर नहीं की कौन कौन सा फंक्शन कैसे यूज होता है और इसका इंटरफेस कैसा है. फर्स्ट थिंग, मैटलैब जो है इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन. ओके, बहुत सारे इसके फंक्शंस प्रीडिफाइंड फंक्शंस है. सो बेसिकली हम लोग वही फंक्शन को यूज करेंगे जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा. फाइन. सो वी विल नॉट डिस्कस एनी अदर फंक्शन. नाउ फॉर एग्जांपल आप हेल्प कमांड बताया था आपको, अगर हेल्प इमेज मारोगे, now let's see, it will display all the functions that is used for image processing. ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए जितने भी फंक्शंस है और you can click here. Fine. So once you click here, it will show you the image processing toolbox. Okay, image processing toolbox. Where is it? Yeah, image processing toolbox. Now here you can find every function. Okay, इसके लिए जो भी चाहिए. For suppose this one, now basic import. Now you can find here I am read. यूज कर सकते हैं रीड करने के लिए. I am write, I am info. Okay, like that. So you have to remember these functions. Okay, first of all, or you can take the help of the MATLAB. Fine. तो जो जो फंक्शन आपके प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा दैट विल बी डिस्कस. ओके, लाइक अभी जैसे आपका ये यूज है बी, द फंक्शन व्हिच इज यूज्ड इज व्हाट, BWDST. So basically this function is used to calculate the distance. Now you can write, you can see it will show the why this function is basically used. Okay, it will take little bit of time. Yeah, now you can see this basically
Yes. So it will give the complete description about this function. Okay. So basically, it is used to calculate the distance between two. You can say 2 points, and by default, it will compute the equivalent distance. Okay. Now, if you want to go for the other part, so you have to use that one. Clear? The thing is, you have to implement this thing. Okay. Thing is, you have to implement this thing. So, okay, just you write down, at least write down this program so that you can implement later on. You save the program. Okay, just write down this program. Okay, ये program को पहले तो एक बार लिख लो क्योंकि आपको ये program को लैपटॉप में लिखना पड़ेगा. So write out this program, then we will discuss some of the functions or some of the tools that we are using in image processing. For those who are having the laptop, they can implement also. Okay, those who are having the laptop, they can implement, or those who are not having the laptop with them, so write down the program. So are these functions compatible with Scilab also? Yeah, it is compatible with Scilab. You can download the Scilab. It is freely available. So I have downloaded that. Yeah, you can try in Scilab. It will perfectly work. But do remember Scilab में कुछ functions का command अलग है. Like यहाँ पर जैसे हम लोग IM show करते हैं, वहाँ पर शायद अलग होगा. ये कुछ command अलग है, लेकिन most of it will support. Most of the command which is supported by MATLAB, it will be supported by the Scilab. Okay. Okay, just write down this program. So give the name of the experiment, the first experiment name. So it is distance calculation of this different distance matrix using MATLAB. Okay. Let me okay. So yeah, is it over? Is it completed? Okay, let me try what we look output. Suppose we create a max IMG. Rows of 5, 5.
happen? It will assign 1 to the तो अगर इमेज देते हैं वहाँ पर नाउ यहाँ पर देख सकते हो अभी आप, तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया, इट माय इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्रिएट किया और ये पॉइंट 22 और 33 में कहाँ गया, 1 नहीं है ना. सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इफ आई एम कैलकुलेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट नाउ, अब यहाँ पे देखो पैरामीटर देखो, DWDIST क्या था आपका, डिस्टेंस मेजर के लिए था. ये आपका मैट्रिक्स हो गया या फिर इमेज हो गया, जिस इमेज के लिए हम लोग लिखेंगे. नाउ दिस इज योर विच मेथड वी आर यूजिंग, सो वी आर यूजिंग सिटी ब्लॉक. तो सिटी ब्लॉक के हिसाब से डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ. दिस विल बी 2, यस और नो, बिकॉज दिस डायगोनल एलिमेंट, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, और दिस विल, व्हाई दिस इज 3, और देखो 1, either you can go 2, 3, this is 3, fine. Similarly this will be 1, 2, 3. Okay, now suppose you want to calculate the chessboard distance. Now you can calculate the chessboard distance also. Chessboard distance calculate करना है. और so let me write chessboard distance. Right. IMC is, you can see here, can find कौन सा distance आया आप यहाँ पर. आप देख सकते हो आपका जो डिस्टेंस है, देखो क्या है, दोनों में कंपैरिजन पता चल रहा है. डायगोनल एलिमेंट को देख के पता चलेगा. यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट का 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है. फाइन, यहाँ पैरामीटर क्या हो गया आपका, चेसबोर्ड डिस्टेंस है. तो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी कुछ बेसिक चीजें लर्न करेंगे, ठीक है, मैटलैब का कुछ बेसिक चीजें लर्न करेंगे. तो आप साइमल्टेनियसली आप नोट डाउन करना, ठीक है. तो फर्स्ट, अगर सपोज इफ आई राइट लाइक दिस, वेरी इंटरेस्टिंग वन, we write img1 image1, okay, is equal to zeros of 5, 5. Fine. So what will display, what it will display, what will it display, क्या आएगा. So it will create a matrix. Why it is active? img1 equal to now अभी क्या है देखो, मैट्रिक्स है 5, ये आपका सब 0 है, ठीक है. नाउ if I use a function I am so किस लिए यूज करते थे, why we are using I am so function, what is the use of I am so, what will the image, Image show के लिए To display the image. to display the image. अगर मैं I am so image 1 करूँगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए. So all the index are 0. If all the index are 0,
So what will be the output? Should be white image. Okay, now you can see this will be, sorry, if all the zeros, we are assuming this is grayscale image है ना, अगर all zero हो गया तो क्या होगा, black होगा कि नहीं? Let me increase the size. Okay, let me increase the size of this figure. Now अभी हम लोग 256, 256 ले रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्रिएट होगा 256 256, तो हम यहाँ पे एक सेमी कॉलम दे दे रहे हैं ताकि क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? सेमी कॉलम जैसे एग्जीक्यूट नहीं होता है ना, आई विल नॉट एग्जीक्यूट, बट ये कंपाइल हुआ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नाउ अभी करेंगे अगर हम लोग आई एम सो, ओके, आई एम सो, और हम लिखते हैं इमेज 1। तो अभी सब क्या है, सब उसका जीरो है, मतलब सब पिक्सल उसका जीरो है, ठीक है? तो सब पिक्सल अगर जीरो है तो इमेज कैसा आना चाहिए, आपका ब्लैक आना चाहिए, है कि नहीं? taking bit of time. Okay. Yes. Now you can view this image. दिख रहा है image? The image is visible. Yes or no? No, sir. Okay. Let me share the screen. अब दिखेगा आपको. अभी दिख रहा है? अभी दिखा? Yes, sir. Yes, तो yes. अभी क्या किया हम लोग, जब हम लोगों ने बनाया IMG, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या लिखा, जब मैंने लिखा IMG1 इक्वल टू जीरोस ऑफ 256, 256, मतलब वो क्या किया, अब मैट्रिक्स बनाया, साइज क्या है उसका, साइज है आपका 256 क्रॉस 256, ठीक है? एंड एवरी पिक्सल वैल्यू 0। तो हम लोग को पता है एक ग्रे स्केल इमेज में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में अगर पिक्सल वही पिक्सल होते हैं 0 एंड 1, ठीक है? तो अगर सब 0 हो गया तो मतलब क्या, सब जो पिक्सल है वो ब्लैक है, और 1 रिप्रेजेंट व्हाइट एंड 0 रिप्रेजेंट व्हाट, ब्लैक। तो अगर सब 0 हो गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ब्लैक इमेज, ओके? तो अगर हमको व्हाइट करना है, ठीक है, अगर सब मुझे व्हाइट चाहिए, तो आई विल टेक वन मोर इमेज 2. So do write down these commands, okay? So we are having one more function once, okay? Once, so let me write 256, 256. So what will create? So it will created a matrix, ठीक है? अब क्या करना है, एक मैट्रिक्स क्रिएट किया, इसमें हर एक वैल्यू क्या है, हर एक वैल्यू आपका 1 है। अगर देखना है तो क्या डालेंगे हम लोग, IMG2 लिखो, इट विल डिस्प्ले द मैट्रिक्स. आई कैन सी ऑल द मैट्रिक्स, ओके? और 256 एलिमेंट, all the values are 1, okay? So if I write IMSO, ठीक है, IMG2, फाइन, क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, what should be the output? Now you can see the entire matrix is white color. White is white because because all the values are 1, ठीक है? अगर अब मैं रैंडम वैल्यूज लूंगा 0 and 1, if I take random values of 0 and 1, then what will be the matrix looks like? So it will be a black and white matrix. अगर 0 and 1 रहेगा, ठीक है? अगर कोई पिक्सल सपोज 0 है, कोई पिक्सल 1 है, 0 है 1 है, 0 है 1 है, जहां 1 होगा वो ब्लैक हो जाएगा, जहां आपका 0 है वो व्हाइट रहेगा. तो ये दो फंक्शन याद रखना, ठीक है? क्या है पहला फंक्शन, जो पहला फंक्शन हम लोग क्या है, जीरोस फंक्शन, ठीक है? पहला फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज जीरोस फंक्शन. So when I write IMG equal to set zeros, now I will pass the parameter, now I can pass the size of the matrix, so it will create the zero matrix. So if I create IMG2 equal to once लिखते हैं अगर, ठीक है, now it will create matrix of 5, 5 with all the value 1. So once plus
It will create all the matrix with 1. Similarly, अगर random number चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? So I will take img3 is equal to rand function use करते हैं हम लोग. Okay, rand function use करते हैं. Now we can give the matrix value 5, 5. So what will create? So it will create a matrix with a random value in between what? 0 to 1. 0 से 1 के बीच में एक random number. पर इसका हम लोग I am show करेंगे. Now what will the image like? कैसा आएगा image? Let us see how the image looks like. Let us see how the image looks like. Okay, the size is very छोटा है इसलिए वो दिखा रहा है. Let me magnify the size of this one. तो हम लोग इसका size कर देते हैं 256 और 256. ठीक है, और यहाँ पर एक सेमीकोलन है, सेमीकोलन, और हम लोग लिखते हैं I am so open. Now you can see the image, how the image is looking like. कैसा आ रहा है image अभी? Now it is a combination of white, black and grey. Okay, grayscale image बोलते हैं. Now image का जो scale है आपका क्या है? In between 0 and 1 है, right? Value in between 0 and 1. So some dots are 0, some dots are 1. Clear? Clear? So do write down the point. So any doubt regarding these three functions? So, पूछो. sir, in Scilab, when I'm trying to use this IamShow function, then it is showing it is undefined variable. Yeah, that will be I am show